सो गाइज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि आप कौन से डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। क्या आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, क्या आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, या आप एसेसरी डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, और यू वांट टू बिकम अ ज्वेलरी डिज़ाइनर। गाइज हर डिपार्टमेंट अलग अलग कोर्सेज ऑफर करता है। फर्स्ट यू शुड सी कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। मेक योर माइंड and then go and search for the courses. You can go and visit the official website of the NID, NIFT and UCEET, or we have come up with a detailed video on UG departments for NID, NIFT. So you can go and search the departments and check for yourself कि आपका interest किस course में है, किस department में है, और कौन से courses, कौन से department उस particular college में offer होते हैं. For example, you want to opt 2 courses at the same time. The first one is fashion designer and the second one is fashion communication. So it's totally fine. You can go with both the courses. But what you have to see before that कि इंडिया में ऐसे कौन से कॉलेज हैं जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं और कौन सा डिपार्टमेंट इन्हें ऑफर करता है। क्या कोई ऐसा कॉलेज है जो ऑफर नहीं करता है लेकिन आपने वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। ये चीज़ आपको क्लियरली ध्यान देनी होगी कि जिस कॉलेज में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, क्या उस कॉलेज में डिपार्टमेंट या कोर्स हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। अनदर थिंग इज दैट कि NID में जो डिपार्टमेंट ऑफर होते हैं वही डिपार्टमेंट NIFT या UCEET में नहीं होते। तो NID, NIFT और UCEET इन सब के अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट हैं और ये सारे ही अपने अपने अलग अलग कोर्सेज ऑफर करते हैं। The main thing is that you should make up your mind and then you should search for each and every course in detail. Also guys, a lot of students miss out to check that if that course in a college is available at postgraduate level or undergraduate level. So guys, once you have decided that this is the course that you want to go on with, check that if it's available in undergraduate level or postgraduate level. For example, if you are going for undergraduate level, then that course at that particular college is not for you. Okay, so once you have decided your interest in the particular stream, in the particular department, just go and search for the colleges. Also, when you are looking for the departments, you often go to the random sites, either Quora or some other websites. Don't do this mistake. अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानना है या किसी भी डिपार्टमेंट पेज के बारे में जानना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही वो नॉलेज आपको मिल सकती है। ओके, if you go in any other website or in Quora, you will definitely get confused about the courses or the departments. The third thing is that to be very very careful about your interest. आप ये देखिए कि कौन सा डिपार्टमेंट वो फ्यूचर स्कोप ऑफर कर रहा है, वो करियर स्कोप ऑफर कर रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड है। ऑल्सो इफ देयर आर 2 colleges and they both are offering the course that you are interested in, so go for both the colleges. Give the entrance examination of both the colleges because each college has limited seat for the department or for the course that they are offering. सो आई एम श्योर आप वो ईयर बर्बाद नहीं करना चाहते होंगे, आप वो ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप उन दोनों कॉलेजेस के फॉर्म को भरिए और दोनों के एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। The second main thing is the eligibility criteria. So suppose guys, if you are in 12th class and you are preparing for the design entrance examination, so some of you do this thing कि आपका अभी 12th चल रहा है तो आप वेट करते हो पूरे साल खत्म होने का और फिर ये सोचते हो कि आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे। वहीं कुछ लोग 11th में होते हैं एंड दे डोंट हैव दिस आइडिया दैट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन एंड स्टिल दे कीप प्रैक्टिसिंग फॉर द डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दैट टू द 2 ways are very wrong. Because you get confused because when you visit to the random websites and the information that are provided there is totally confusing and are not correct. So guys, always keep this mind that yes, you can give your design entrance exam when you are in 12th. Of course, after 12 you can definitely give, but you can also give examination while you are in 12th standard. Keep this thing very very clear in your mind. You can fill out the forms and the forms usually come in the month of October to November. Mostly the exams for NIFT or NID are conducted in the month of January to February, okay, and the forms often comes out in the month of October to November. What you have to do is you have to keep checking their official website for more new updates, and when the September arises, keep checking their official website, keep checking for the forms that are coming, right, registration form, so you won't miss out on any update regarding that. Also, some of you find problems that how to prepare,
how to prepare our board examination with design entrance examination. So guys, अगर आप पहले से ही ये माइंड बना लेंगे कि आपको 12th और डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम साथ में देना है और आप दोनों को ही साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो you should fix to a particular schedule. For this, we have made a detailed video on how to manage your 12 board exam with your design exam. You can watch that video so that there would be no chance of any confusion for you and you can make your mind very clearly. Also, with the eligibility criteria, there are different eligibility criteria. For general category, there is different eligibility criteria, and for reserve category, there are totally different eligibility criteria. Go and look for these eligibility criteria on the official website and not on any random website. Now guys, coming on to the last and the third important thing that you should be aware of when you are preparing for your design entrance examination is stationery. So guys, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जहाँ पे रूलर स्केल अलाउड होता है यूज़ करना, पर वहीं कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर यू आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड ऑन यूजिंग स्केल. सो गाइज कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि कौन से ऐसे एग्जाम है जहाँ पर रूलर अलाउड है और कहाँ पे रूलर अलाउड नहीं है. Also, there are some design entrance examination where you are not allowed to use color like acrylic or poster colors. You are only allowed for dry colors. For example, NID allows you to use dry colors but has put the restriction on using acrylic, poster color or any other water or alcohol medium colors. So, when you are preparing, I don't want you to keep on practicing randomly on the colors. बट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वही प्रैक्टिस हमारी एग्जाम टाइम रहती है. तो अगर अभी आपने ये पूरा टाइम वेस्ट कर दिया गलत स्टेशनरीज के साथ, फॉर एग्जांपल जहाँ कलर यूज़ नहीं करने थे आपने वहाँ पर कलर यूज़ कर दिए, सो you have a high chance of getting disqualified from the examination and all your practice will be just go in vain. So be very careful about the stationery and about the particular things that are allowed in the examination. For that, we will come up with a video that will have a detailed explanation of the stationery that are allowed in the examination. So guys, I hope I was clear to explain, to convey it to you that what are the things you should be aware while preparing for the design entrance examination. Also, subscribe to our channel and please let us know in the comment section of which video you want us to make next. Also guys, we are coming up with the 3 different videos for different examination for NID, NIFT and UCET, in which I'll be giving you a detailed information of the things that are particularly allowed in that examination and the 3 things that are particularly to be kept in mind while preparing these three different examinations. Thank you and see you in the next video.